बात नहीं करेंगे भाई. Today we deal with residues at a pole. In this class, we will study residue at a pole. So now, what do you mean by the residue? And we have studied the pole. So first of all, I am going to write a definition. Then I will tell you about the residues. Okay? Suppose a single-valued function we know about the single valued function. Suppose a single valued function f of z has a pole of order m at z equals to a, then by definition of pole the principal part of the Lorentz expansion of f of z contains only m terms. Contains only m terms. So that f of z can be written as by the Lorentz expansion in two parts. First one is summation and runs from 0 to infinity an z minus a to the power n plus summation and runs from 1 to m bn z minus a to the power minus n. Okay, and this part is called the analytic part of the Lorentz expansion, analytic part, and this one is called principal part. Okay, तो अगर हम सिंगुलरिटीज की बात करते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के बारे में तो आप उसका लॉरेंट एक्सपेंशन करके उसका जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसमें भी टर्म्स से भी काउंट करके बता सकते हैं कि उसका लॉरेंट एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं. अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इसकी प्रिंसिपल पार्ट में तो वो पोल होता है जितनी टर्म्स है उतने ऑर्डर का पोल कहलाता है ना. And here an where n is what? An equals to 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour C f of z dz divided by z minus a to the power n plus 1. And b of n is nothing but 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour C f of z dz upon z minus a to the power minus n plus 1. Minus n plus 1. And where one more thing is here where C the contour is represented by the circle modulus of z minus a equals to r. It is the equation of the circle centered at a with radius r. Okay. Now
if we talk about the B1, so what do you mean by the B1? B1 is nothing but the 2 pi iota b1. How we will get the b1? Just replace n equals to 1 in this expression. Okay, so b1 will be 2 pi iota integration over the closed contour c f of z dz, because if you put here 1 in place of n, then minus 1 plus 1 will be 0, z minus a to the power 0 equals to 1. So b1 is this. Okay, सो ये जो आपकी जो प्रिंसिपल पार्ट का B1 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये आपका रेसिड्यू कहलाता है, ये आपका रेसिड्यू कहलाता है. ठीक है, द कोफिशिएंट B1 इज कॉल्ड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड. आपको इतना सब ये करने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, है ना. B1 इक्वल्स टू दिस, ये आपका क्या है, रेसिड्यू एट Z इक्वल्स टू ए. The coefficient B1 is called the residue of f of z at the pole z equals to a, and it is denoted by the symbol residue at z equals to a, that is equals to 1 upon 2 pi iota integration over the contour c f of z dz, that is equals to nothing but the B1. Okay, B1. If the if z equals to a is a simple pole, if z equals to a is a simple pole, अगर ये हमारे पास एक सिंपल पोल है, then वो z equals to a is a simple pole. ठीक है, तो सिंपल पोल होने का मतलब है कि प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक ही टर्म होगी. और आप जो इसका लोरेंट एक्सपेंशन लिखेंगे वो किस तरह से लिखा जाएगा, समेशन एन रन्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर जेड माइनस ए टू द पावर एन एंड प्लस समेशन, सॉरी, आप इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सिर्फ एक ही टर्म है तो वो लिखा जाएगा बी वन अपॉन जेड माइनस ए. ओके, यहाँ पे समेशन लिखने की जरूरत नहीं. अगर वो सिंपल पोल है इसका मतलब है कि इसकी प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक ही टर्म है, और इसकी प्रिंसिपल पार्ट में एक टर्म क्या होगी, बी वन अपॉन जेड माइनस. ठीक, इन केस अगर आपका पोल सिंपल पोल है, सिंपल पोल मतलब 1 डिग्री का, 1 ऑर्डर का. ओके, और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप z माइनस ए ऑपरेट करते हैं बोथ दी साइड, z माइनस ए एफ ऑफ z. Okay, so it will be written as n equals to 0 to infinity n z minus a to the power n plus 1 and plus b1. Okay, just multiplication of z minus a on both the side. Just take the limit z tends to a both the side, limit z tends to a both the side. Okay, z tends to a. तो क्या होगा कि ये वाली जो आपका एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप z को a पे टेंस करा देंगे तो z माइनस ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, जीरो प्लस, और इस पे लिमिट क्या हो जाएगी b1. तो अगर आपके पास सिंपल पोल है तो सिंपल पोल पे रेसिड्यू b1 हमारा क्या होता है, रेसिड्यू. तो सिंपल पोल पे आप रेसिड्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेसिड्यू एट द सिंपल पोल. अभी छोटे छोटे से फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने, रेसिड्यू एज ए सिंपल पोल z इक्वल्स टू a इज नथिंग बट द b1, इज नथिंग बट द लिमिट z टेंस टू a z माइनस a f of z. Okay, z minus a f of z, and that is equals to 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour c f of z dz. both are the same. तो जी जो सा भी फॉर्मूला आपको सुटेबल लग रहा है, आसान लग रहा है लगाने में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये आपकी बात होगी रेसिड्यू एट ए पोल. ठीक, अब हम बात करते हैं रेसिड्यू एट इंफिनिटी पे, है ना. नाउ वी टॉक अबाउट द रेसिड्यू एट इंफिनिटी.
residue at infinity. If f of z has a pole, has an isolated singularity, isolated singularity, and we have studied all the types of the singularity in our previous lectures. This term is very important. If f of z has an isolated singularity, okay, isolated singularity, then the residue, isolated singularity at z equals to infinity, okay, at z equals to infinity. Then the residue at z equals to infinity is defined as residue as z equals to infinity equals to minus 1 upon 2 pi iota integration over the closed control C f of z dz. So if we talk about the residue at z equals to infinity, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू पाई आयोटा अपॉन इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंट्रोल सी एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज नथिंग बट द माइनस ऑफ बी वन ओके माइनस ऑफ बी वन my b1 is what residue at the simple pole z equals to a. So if a function is analytic at a point z equals to a, then the residue at z equals to a will be 0, but not so at infinity. Okay, what does it mean? अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है ना, एट जेड इक्वल्स टू ए, और जेड इक्वल्स टू ए पे एनालिटिक है, उस पर सिंगुलरिटी नहीं है फंक्शन के पास, और उस पर आपको उसका रेसिड्यू निकालना है, तो उसका रेसिड्यू जीरो होता है. एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि अगर आप रेशिड्यू की बात करेंगे निकालने की, तो एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंट्रोल सी बाय द कोशी थ्योरम जीरो हो जाता है ना, तो वहीं से निकल के आता है. बट ऐसा जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए नहीं है, क्योंकि जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपका फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, बट वहां पे आपको सिंगुलरिटी मिल जाएगी, वहां पे आपको रेशिड्यू मिल जाएगा जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे. ओके, नाउ वी विल uh, prove the another theorem here, and a very small result is here. Cauchy residue theorem. तो हम पहले रेसिड्यूज पे एक छोटा सा कलेक्शन करेंगे अपने पास, जितना भी इसका रिलेटेड थ्योरम्स है, जितना इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे. देन वी विल अप्लाई ऑन द एप्लीकेशंस, दैट इज ऑन एग्जांपल्स. देन वी विल स्टडी all the related examples based on residues. If f of z is analytic, if f of z is analytic within and on a closed contour C except at a finite number of poles. Z1, Z2 to Zn within C, okay, within C. Then
Integration over the closed contour C, f of z dz will be equals to integration over the closed contour C1, okay, f of z. अगर इन टर्म्स हम उसकी बात करें आप रेसिड्यू तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं सॉरी फॉर दिस residue at although it will be written as 2 pi iota summation I runs from 1 to n residues z equals to zi, okay, z equals to zi, and again sum of the all the residues at all the poles multiply by 2 pi iota will be the value of the integration. तो ये दूसरा तरीका निकल गया कि रेशिड्यू की फॉर्म से इन फॉर्म ऑफ द रेसिड्यूज आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी फंक्शन के ओवर द क्लोज कंट्रोल सी इफ देयर आर सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रीजन and the proof of this result is very simple. If we talk about the proof, तो गाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रूफ बहुत सिंपल है मान लीजिए कि हमारे पास एक एनालिटिकल रीजन है एनालिटिकल रीजन नहीं कहेंगे हमारे पास एक रीजन है सी ओके और इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट पे सिंगुलरिटीज है ना मान लीजिए Z1 पॉइंट है इसी तरीके से Z2 पॉइंट है इसी तरीके से Z3 हो गया Z4 हो गया ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास देयर आर सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन पे हमारे जो फंक्शन है वो सिंगुलर है सिंगुलरिटीज है तो हम एक काम करते हैं इनको किसी एक इंटरवल में क्लोज कर लेते हैं सर्किल में ओके गामा वन गामा वन सर्किल में हमने इसको क्लोज कर लिया और इसको हमने क्लोज कर लिया गामा टू सर्किल में सिमिलरली इसको हमने क्लोज कर लिया गामा थ्री सर्किल में और इसको हमने क्लोज कर लिया गामा फोर सर्किल में ओके तो इसी तरीके से आपने क्या करा इन सबको क्लोज कर लिया ये ठीक अभी जो रीजन हमारे पास यहाँ पे बचा ये रीजन है ना इसमें फर्स्ट क्लास हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक है ठीक इनमें हमारा फंक्शन क्या है एनालिटिक तो बाय द कोशी सिंस सिंस ये आपके पास जो रीजन है ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन हो गया ओके तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन का अच्छी तरीके से जिक्र किया है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है तो इस फर्स्ट क्लास में मल्टीपल कनेक्टेड रीजन लेट f of z be an analytic function accept z1 z2 z3 up to zn within the closed contour C closed is the closed contour C okay then by the Cauchy theorem over the multiple connected region then by the Cauchy theorem over the multiple connected region we have integration over the closed contour C f of z dz will be equals to integration over the closed contours region gamma 1 f of z dz and plus integration over the closed contour
gamma 2 f of z dz, and similarly it will go up to integration over the closed control gamma n f of z dz, where gamma 1, gamma 2, gamma 1, gamma 2 up to gamma n are the circles, are the circles containing z1, z2 up to zn. Okay, so multiply by 1 upon 2 pi iota both the side, 1 upon 2 pi iota both the side, integration over the closed contour C f of z dz equals to 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour gamma 1 f of z dz, and plus 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour gamma 2 f of z dz, and plus dot 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 plus integration over the closed contours gamma n 1 upon 2 pi iota f of z dz. So guys, if you talk about the first one integration, okay, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 pi iota integration over the closed contour C f of z dz equals to, ये हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि ये जो है गामा वन के अंदर इस रीजन के अंदर हमारे पास एक होल है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ओके, अब ये क्या होगा, ये आपके पास एक रेसिड्यू होगा, तो इसको आप कहेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू z1। Similarly, it will be the residue at z equals to z2. So plus dot 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 plus residue at z equals to z. So we can write it in the summation form as summation I runs from 1 to n residues at z equals to zi. Okay, and it can be written as integration over the closed contour C f of z dz equals to 2 pi iota integration summation I runs from 1 to n residues at z equals to zi. ओके, सो ये आपका कोशी रेसिड्यूज थ्योरम का प्रूफ है, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान प्रूफ है। ओके गाइस, ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब कभी हमें सिंगुलरिटीज निकालनी होगी, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम आसानी से सिंगुलरिटीज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ फॉर्मूलाज अवेलेबल होंगे जो आगे हमारी सिंगुलरिटीज एनालिसिस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वन मोर रिजल्ट वी आर गोइंग टू डील इन द सीक्वेंस। If a function f of z is analytic except at finite number of singularities, except at finite number of singularities, including that at infinity, then the sum of residues of these singularities is zero. बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने आप में। Then the sum of residues of these singularities
is 0. ओके भाई साहब, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लैटिक फंक्शन है, और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज है, उसमें सिंगुलरिटीज एट इंफिनिटी भी इंक्लूडिंग है, तो सम ऑफ ऑल द सिंगुलरिटीज विल बी 0. ओके, सम ऑफ ऑल द सिंगुलरिटीज विल बी 0. तो अगर हम बात करें कि एक हमारे पास क्लोज कंटोर रीजन है C, which encloses all the singularities of f of z, except that at infinity. At infinity वाली सिंगुलरिटी उसके अंदर से छोड़ देते हैं. Then the sum of residues at these singularities within the closed contour C is given by f of z by the Cauchy residue theorem. Dz equals to 2 pi iota summation of over r. Okay. So this implies that minus 1 upon 2 pi, sorry, 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour C, f of z dz will be equals to summation r. Okay. And if you talk about the minus, we know that the minus of 1 upon 2 pi iota integration over the closed contour C, f of z dz is what? Residues at infinity. Residues at infinity. So if we add both the equalities, then we get some summation, that is the sum of the residues of at all the singularities at the poles, all at all the poles, and plus residues at z equals to infinity will be is nothing but equals to 0, which proves the required result. Okay, which is the required result. Now we will deal with some examples so that we could familiar with these questions very easily, with these concepts very easily. Here we will deal the question number 1. Evaluate the residues. Evaluate the residues of z square divided by z minus 1, z minus 2, z minus 3 at z equals to 1, 2, 3 and infinity, and show that their sum is 0, and show that their sum is 0. Let f of z equals to z square divided by z minus 1, z minus 2 and z minus 3. Then the residues at z equals to 1 is what? The residues at z equals to 1 is what? Limit. Simple pole है भाई, z tends to 1 simple pole है. Then apply the formula at z equals to minus a. Z equals to a की वैल्यू 1 है यहाँ पे. f of z है ना, f of z क्या हो गया आपके पास? z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1, z माइनस 2 और z माइनस 3. ओके, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी
यहाँ पर जब आप सिंपली इसमें लिमिट पुट करेंगे z इक्वल्स टू 1, then you will get okay 1/2. Similarly, we will calculate limit residue at z equals to 2 और z equals to 2 भी एक सिंपल पोल है, तो उस पर भी आप ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं कि लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 और z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3 ओके z माइनस 2 z माइनस 2 कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 अपॉन आई थिंक इट शुड बी माइनस 1 ओके no, no, no. It's about z. Oh, okay, it should be minus 4. Now, similarly, we will find the residue at z equals to 3. Z equals to 3 is also a simple pole. So, residue at the simple pole, we know that residue at z equals to 3 will be equals to 9 by 2. Will be 9 by 2. Okay. Now, in the sequence, we also try to find out the singularity at z equals to infinity. So singularity at z equals to infinity will be limit z tends to infinity minus of z f of z. Okay, minus of z f of z. That is equals to limit z tends to infinity and minus z to the power 3 divided by z minus 1, z minus 2, z minus 3, and which is nothing but equals to minus 1. Okay, so some of the residues, if we check some of the residues, what about some of the residues? Will be equals to 1 by 2 minus ka 4 and then plus ka 9 by 2 minus ka 1 equals to 0. Okay, तो यहाँ पर हमने एक तो इस एग्जाम्पल पे सारे सिंपल पोल पे रेसिड्यूज भी कैलकुलेट कर लिए और हमने ये भी चेक कर लिया कि सम ऑफ द रेसिड्यूज इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0, है ना। अब हम अगर अगले सवाल की तरफ मूव करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उस पर जाने से पहले हमें कुछ और फॉर्मूलोज की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस फॉर द टुडे क्लास वी विल स्टॉप हियर, आई विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द same from the same topic, that is residues, and it's very interesting topic. We will continue this topic for a long period of time. I think we will move around 2 to 3 lectures on it. So see you in the next class. Thank you very much.